Okay, total 14 participants. Officer is there, Amritya, Anju, Anvari, Khushbu, Kumar Gautam, Prajwal, Rahul, Saloni, Vizender, Premchand, Shreya, and Vijay. Okay, we can start. Yes, sir. Okay. So this course is the refrigeration and equipment engineering, and in this course we will study various refrigeration and equipment uh, engineering, which is involved in the refrigeration cycle. Say for example, compressor, condenser, evaporator, receiver, so etc. We will study. But before that, we have to know the physics concept. What that cycles, how it is applied in case of refrigeration. So this force, work, power, energy, the fundamentals of force, work, power and energy today we will cover. So now question is coming, force. What is force? So force is if push or pull on an object. अगर कोई वस्तु है, चीज है, उस पे अगर हम उसको अपनी ओर खींचते हैं या फिर उसको धकेलते हैं, so that is the force we are applying. It can be described by strength and direction. Okay, and if force gives on, some noise is coming. Upshare your voice. So a force gives on an energy. Why we are applying a force on an object? To start moving or to stop moving or change the direction. Understood? Force is a push or pull on an object. So it can be described by the strength or direction. Why we are applying a force on an object? To start moving or to stop moving or change the direction. That is the force. Okay. Then the strength and direction of force, the SI unit of force is the, already we know that is the Newton. And the symbol of Newton is the capital N. Don't forget, most commonly come in competitive exam, Newton. SI unit of force is the Newton. And generally, we are designating in capital letter N. 1 Newton about the force you exert to lift. Agar koi object ko if we are lifting, so how much force we are applying, we can expressed in terms of newtons. So 1 Newton is about the force you exert to lift. So this is the scientist named Sir Isaac Newton, founder of physics. So having a great contribution in physics by this scientist Newton. Then what are the type of force? It is a two kind of force. One is contact force, another one is non-contact force. We are talking about the force. So force, it is a push or pull on an object. Why we are applying a push or pull? To start the object, to start moving the object, to stop moving the object, or to change the direction. Then what kind of force is there? So it may be two kinds, contact force or non-contact force. We will go in detail. Contact force, a force or pull, a push or pull on an object by another, that is touching it. मगर मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में है तो देयर विल बी ए पुश और पुल, सो दैट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स. अगर एक वस्तु दूसरी वस्तु के
कांटेक्ट में आके टच हो रहे हैं, उसकी वजह से जो है अगर कोई ऑब्जेक्ट पुश हो रहा है या पुल हो रहा है, so that is your contact force. Contact force can be either a strong or weak. It depends upon the force, how much force it is applied. Example is the friction. Friction, force that opposes motion. Friction में क्या होता है force that opposes the motion between two surfaces in contacts. जब हम चलते हैं और घर्षण लगता है ना, जब हम ब्रेक मारते हैं घर्षण लगता है, घर्षण लगने की वजह से क्या होता है, हमारा व्हीकल मूव स्टॉप हो जाता है. सो दैट इज द टू फोर्सेस दैट अपोजेस मोशन बिटवीन टू सरफेस. दो सरफेस के बीच में जो है अपोजिट फोर्स लगने की वजह से जो है वो हमारा फ्रिक्शन हो रहा है. सो दैट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, एंड हियर वी विल गेट द स्ट्रॉन्ग फोर्स, नॉट ए वीक फोर्स. ओके. The non-contact force, a force that one object can apply to another object. इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे मींस फोर्स अप्लाई करता है, बट इसमें टच नहीं होता है. विदाउट टचिंग इट ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन वन ऑब्जेक्ट. सो एग्जांपल इज द ग्रेविटी एंड मैग्नेटिज्म. ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज ए यूनिवर्सल अट्रैक्शन बिटवीन ऑल ऑब्जेक्ट. जो अर्थ मैग्नेटिज्म है, सॉरी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स है. जब हमारा ये न्यूटन ने डिस्कवरी जो किया था, ये हमारे जब वो आम के बगीचे में बैठा हुआ था तो फ्रूट्स ऊपर से नीचे गिरा, बट नोबडी उस पे मींस इतने रिसर्च किया जो क्यों ये ऊपर से नीचे ही तरफ आ रहा है, ये आकाश में ही क्यों नहीं जा रहा है. दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय आवर अर्थ. So gravitational force is applied. So gravitational force में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं करते हैं. जो भी फोर्स अप्लाई होता है उसमें ऑब्जेक्ट को टच नहीं किया जाता है. मैग्नेट है, मैग्नेट को अगर हम एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करें, दूर से ही वो अपनी ओर को उसको खींच लेता है या फिर उसको रिपेल्स कर देता है. आइदर अट्रैक्ट करता है और रिपेल्स करता है. सो दैट इज द मैग्नेटिक or magnetism. So this is the example of non-contact force. Understood? Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Then the gravity, an attraction force that exists between all objects that have a mass. It is an attractive force. It exists between all objects which is having a mass. Understood? Then weight is a measure of force of gravity. Weight जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट का weight है, what is weight? So weight is a measure of force of gravity acting upon an object. So this force of gravity on the earth generally applied 9.8 meter per square second square. ठीक है. Then all object falls to earth at an acceleration of 9.8 meter per square meter per second square due to the force of gravity. So this is the gravity. See, then the mass is the amount of matter in an object. Which object has more mass? Can you tell here? So it depends how much matter it is there in the objects. ऐसा नहीं है साइज बड़ा है तो उसमें मास ज्यादा होगा. ठीक है. So it depends upon the matter. Then weight and mass on the earth. Weight and mass are related but are not the same. How? Weight can change due to the gravity. अगर अर्थ में है और हम स्पेस में हैं, दोनों जगह हमारा वेट सेम नहीं होगा, ये चेंज करता है. Why? Because of the gravitational force. हम स्पेस में जाएंगे तो फ्लोट होने लगते हैं, लेकिन अर्थ पे हैं तो हम फ्लोट नहीं हो रहे, आराम से मूव कर रहे हैं. बट मास जो है दोनों जगह सेम होगा. मास डजंट चेंज बट वेट चेंज ड्यू टू द ग्रेविटी. बट मास कभी चेंज नहीं होता है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से. सो दैट इज द
difference. Then strength and direction of force. Generally, we are represented in terms of arrows. Arrows can be used to show forces. किस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लग रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है या अपोजिट डायरेक्शन में. Then the length of an arrow shows the strength of the force. जितना लंबा एरो का लेंथ होगा उतना स्ट्रेंथ का फोर्स हम बोल सकते हैं उसमें ज्यादा है. Then the direction that the arrow points shows the direction in which the force was applied. किस डायरेक्शन में, अगर एक डायरेक्शन में जा रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन, एक रिवर्स डायरेक्शन, so point of the arrow it indicates in which direction force is applied. Then stronger the force, longer the arrow. अगर stronger force लग रहा है तो arrow का जो है length जो है वो लंबा होगा. So that is the strength and direction of forces. We will go. Then another one is net force. Net force is the combination of all the forces acting on an object. सारा force को हम if we are combining, that is the net force. How we can calculate? To calculate the net force, if the force acting in the same direction, they are added together. अगर same direction में हमारा force लग रहा है, same for example forward direction में, suppose 5 Newton, 5 Newtons. So we have to add together. So that will be the net force. If the force acting in opposite direction, then we have to subtract. Here we don't have to add because force one is applying in the forward direction, another force is applying in the opposite direction or reverse direction. So here we have to subtract. So that is the net force. Combining forces, that is the balanced force. Forces acting on an object that combine and form a net force of 0. Then there will be no change of direction. Balanced force is responsible for net force which is 0 and there will be no change of direction. अगर balanced force लग रहा है, you can see 5 न्यूटन हम इस तरफ से लगा रहे हैं, मींस खींच रहे हैं, दूसरे डायरेक्शन में वो अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन सेम फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो there will be no movement of the object. So net force is how much? Net force is 0. That's why there is a no movement. ये समझ में आ रहा है? This is important. बैलेंस्ड फोर्स जब लगाते हैं 5 न्यूटन्स, अगर कोई भी वस्तु को अगर हम अपने, जैसे हमारा टैग ऑफ वार होता है ना, 5 आदमी इधर है 5 आदमी उधर है, दोनों तरफ 5-5 आदमी तो है, लेकिन पांचों आदमी का जो फोर्स लगाने का जो कैपेसिटी है वो सेम फोर्स अगर लगेगा तो वो जो हमारा मींस रस्सी है, रोप है, वो एक ही जगह रहेगा, देयर विल बी नो मूवमेंट. लेकिन कोई भी तरफ से अगर 5 न्यूटन फोर्स की जगह वो 10 न्यूटन हो जाएगा, देन देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट और देयर विल बी मूवमेंट ऑफ द रोप. तो क्या होगा, दूसरा पार्टी जैसे ही ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो जीत जाएगा. सो दैट इज द नेट फोर्स और बैलेंस्ड फोर्स. बैलेंस्ड फोर्स अगर लगेगा देन देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो चेंज इन द मोशन और देयर विल नो मूवमेंट. Then combining forces, unbalanced force. Unbalanced force जो है, forces acting on an object that combine and form a net force that is not a 0. अगर net force 0 होगा तो ऑब्जेक्ट का मूवमेंट और मोशन नहीं मींस नहीं होगा, there will no movement or there will no motion in an object. अगर forces acting on object अगर हम उसको कंबाइन करते हैं, then net force which is not 0. Say for example 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो definitely there will be movement of the motion. It means there will be movement in the object. 5 न्यूटन सेम डायरेक्शन में अगर हम खींचेंगे, लगाएंगे, तो definitely there will be movement. So unbalanced forces causes an object to move, whereas balanced forces causes an object not to move because there is a balanced force. Unbalanced force में हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, मोशन होता है.
Forces moving in the same direction are added together. 5 न्यूटन को हम क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में लग रहा है तो हम उसको ऐड करेंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो हम उसको सब्सट्रैक्ट करेंगे. से फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन एक डायरेक्शन में लग रहा है और 10 न्यूटन दूसरे डायरेक्शन में लग रहा है, तब इस केस में हमको जोड़ना नहीं है. देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 10 न्यूटन minus 5 newtons is equal to 5 newtons. Understood? बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स. अनबैलेंस्ड फोर्स होगा तभी हमारा ऑब्जेक्ट में मोशन होगा, मूवमेंट होगा. ठीक है. देन हाउ फोर्स, कैलकुलेशन फार्मूला, हाउ द फोर्स इज कैलकुलेटेड. द फोर्स का जो फार्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन. F is equal to m into a. F, whereas F is the force. Generally we are expressing in terms of newtons, capital N. Mass we are expressing in terms of kilogram, kg, and acceleration in terms of meter per square, means per second square. Okay, so mass into acceleration, this is also important. Mass commonly come in competitive exam. Force formula. Then what does work? अभी force हमने खत्म किया. Now it is the work. What does work mean to you? Are you doing work? When you are lifting a weight, are you working? अगर हम जिम में जा रहे हैं और वेट उठा रहे हैं, do you think it is a work? It is a kind of work. Or walking with a big bag of grocery in your hand. अगर हम शॉपिंग मॉल में जा रहे हैं, शॉपिंग मॉल से निकल रहे हैं एंड कुछ हमारा ट्रांसपोर्टेशन नहीं दिख रहा है, देन यू हैव टू होल्ड दैट ग्रोसरी बैग एंड यू हैव टू वॉक. डू यू थिंक दैट इज ए काइंड ऑफ वर्क और दैट इज द वर्क? कंप्लीटिंग योर होमवर्क असाइनमेंट. इफ वी आर गिविंग एनी असाइनमेंट दैट यू हैव टू सॉल्व इन योर हॉस्टल और इन योर होम. So completing of homework assignment, do you think it is a kind of work? Writing an essay, do you think it is a work? What is your answer? Yes, sir. All four, do you think that is a work? No one is telling यार. अरे काम कर रहे हो या नहीं घर में? Yes. वर्क नहीं होगा ये. कौन सा नहीं होगा? वर्क करने के लिए सर फोर्स के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट का भी रिक्वायरमेंट होता है. जहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों काम नहीं करेगा वहाँ वर्क नहीं हो सकता. तो इस चारों एग्जांपल में से कहाँ पे नहीं हो रहा है? राइटिंग एंड एसे में भी नहीं हो रहा है, होमवर्क में भी नहीं हो रहा है, तो और there is no work. बैग में भी हम भी मूव कर रहे हैं और बैग भी मूव कर रहे हैं, वहाँ भी वर्क नहीं हो रहा है. और वेट को भी लिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना आप लग रहा है उतना ग्रेविटी डाउन लगा रहा है, यहाँ भी वर्क नहीं कर रहा है. अच्छा, तो आंसर विल कम. ओके, आई एम एग्री विथ क्या नाम है, डॉली. आंसर विल कम. फिजिक्स कॉन्सेप्ट है वर्क का. ओके, जो फिजिक्स मानता है यही वर्क है. हम लोग आम भाषा में बोल देते हैं अरे कुछ भी कर रहे, क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं सर, बोल देते हैं ना, काम कर रहे हैं. लेकिन फिजिक्स बोलता है नहीं, वर्क क्या है? वर्क का डेफिनेशन बोलता है वर्क इज डन ओनली व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट causes the object to move in the same direction. अगर हम ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली है वो ऑब्जेक्ट मूव होना चाहिए. अगर वो मूव हो रहा है देन ओनली उसको हम वर्क बोल सकते हैं या वर्क इज डन वी कैन से. ये फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बोल रहा है. So your answer is clear now here. If you are applying a force to cause the object to move,
then only it is called as work or work is done. So this is the concept, physics concept of work. कांस्टेंट फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट पे, अगर ऑब्जेक्ट हमारा मूव करेगा तभी हम उसको बोल सकते हैं भाई वर्क हुआ. अगर वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो देयर इज ए नो वर्क. अंडरस्टूड? बोलो यार, समझ में आया या नहीं? हेलो? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Okay. Now we will go to next. Then, what is considered as work done in physics? You push a heavy shopping trolley. जो हम शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो ट्रॉली को हम क्या करते हैं? पुश करते हैं, धकेलते हैं. ट्रॉली को धकेलते हैं तो ट्रॉली इज ट्रेवलिंग एट मींस 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. तो दिस इज द एग्जांपल. हियर वर्क इधर हो रहा है, so that is the work is done. You lift your school bag upwards by 1 meter. अगर हम ऊपर की तरफ स्कूल बैग को मतलब खींच रहे हैं तो स्कूल बैग का मूवमेंट हो रहा है, so that is also 1 meter movement, so that is also a work. Then what is not considered as work done? You push against a wall. जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग में हम पूरा मतलब धक्का मार रहे हैं लेकिन बिल्डिंग मूव ही नहीं हो रहा है, दीवार मूव ही नहीं हो रहा है, then it is not called as a work. मूवमेंट होगा तभी हमारा मीन्स वर्क इज डन वी कैन से. जंपिंग कंटिन्यूसली ऑन द सेम स्पॉट. अगर हम कंटिन्यूसली जंप कर रहे हैं एक ही जगह पे तो वर्क हमारा नहीं हो रहा है. होल्डिंग ए चेयर एंड वॉकिंग अराउंड द क्लासरूम, दैट इज ऑल्सो नॉट ए वर्क. सो दीज आर द सम एग्जांपल एंड व्हिच इज नॉट कंसिडर्ड एज ए work done. Then you are helping to push your mother's heavy. This is the example, means how we can calculate how much work is done. So say for you are helping to push your mother's heavy shopping cart with a force of 50 newtons. ठीक है, जो शॉपिंग कार्ट है हमारा या ट्रॉली है, उस ट्रॉली को हम अपनी मम्मी को मदद कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए. So we are applying a 50 newtons force and we are traveling for a distance of 200 meter. Then what is the amount of work done? We have to calculate. So this is the formula. W is equal to F into S. W मतलब work, F मतलब force, S मतलब distance. So W generally we are expressing in terms of joule or kilojoule. Sir. Force, हाँ बोलो यार. S डिस्टेंस को लेंगे या डिस्प्लेसमेंट सर? Distance or displacement? Distance generally we are expressing distance. No sir. No sir. Only displacement sir. अरे both are same यार. 200 meter you are traveling a distance ना, or displacement you are saying ना. That movement नहीं सर, वापस उसी बिंदु पर अगर आ जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा सर. हाँ तो फिर अगेन यू हैव टू अप्लाई योर फोर्स. सर जैसे बोले सर चेयर को होल्ड करके पूरा क्लासरूम में घूम गए तो बर्डन 0 होगा क्योंकि वहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ तब ना सर. हाँ नहीं तो डिस्टेंस तो क्या हो गई. नहीं वहां हमारा ऑब्जेक्ट का नहीं हो रहा है ना. ऑब्जेक्ट का हमारा कहाँ हो रहा है? अगर किसी को हम पुश करेंगे या पुल करेंगे, डेफिनेशन ठीक से देखो, अगर हम उसको धकेलते हैं या खींचते हैं तो फोर्स हमें अप्लाई करना है. फोर्स अप्लाई करेंगे तो मूवमेंट होगा, मूवमेंट होगा तभी वर्क होगा. मूवमेंट नहीं होगा तो वर्क नहीं होगा. तुम एक चेयर ले रहे हो और उसको घूम रहे हो रूम में ही, तुम उसको धकेल नहीं रहे हो ना, या अपनी ओर खींच तो नहीं रहे हो, तुम लेके घूम रहे हो.
ठीक है. So work done generally we are this formula says W is equal to F into S. So W is the work we are expressing in terms of joule or kilojoule. Force we are expressing in terms of newtons, capital M, and S is the distance or displacement you are seeing, generally distance. So 50 newtons हम लगा रहे हैं force, कितना distance cover कर रहे हैं 200 मीटर. So you have to multiply with this, so that will give the joule. So this is the joule. That means this much amount of energy we are applying, or work we can say. इसी को अगर किलो जूल में डिवाइड करेंगे तो you have to divide it by 1000, so 10 किलो जूल. So कितना किलो जूल एनर्जी हमको लगाना पड़ रहा है? 50 न्यूटन्स फोर्स से अगर हम ट्रॉली को मतलब ये पुश कर रहे हैं तो 200 मीटर तक अगर वो जा रहा है तो we have to apply 10 किलो जूल ऑफ एनर्जी, then only we can say work is completed. अगर हम 50 न्यूटन्स फोर्स लगाएंगे 200 मीटर डिस्टेंस तक जाएंगे, then we have to expense 10 किलो जूल energy. So that is the work done. Okay. Then energy. Work के बाद में हमारा आता है energy. Energy generally we are defining capacity to do work. Energy is the capacity to do work, and we are expressing the SI unit of energy is the joule. And this energy we are having a many forms. सबसे कॉमन फॉर्म सब जो है पोटेंशियल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है. दीज आर द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. अगर हमको वर्क करना है तो हमको एनर्जी लगाना है. एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क. वी आर एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ जूल और किलो जूल. ठीक है ना. सम एग्जांपल है, a form of energy that body in motion possesses. A body at rest, will it possess any kinetic energy? Kinetic energy का ये है, a form of energy that a body in motion possesses, that is called as kinetic energy. Body at rest, will it possess any kinetic energy? Example, bullet shot out from pistol. Helicopter flying at the rate of 120 km per hour. So these are the kinetic energy. The amount of kinetic energy of a moving body depends upon the mass of the body and velocity per meter second. Then when either mass or velocity of moving body is increased, mass as well as velocity अगर इंक्रीज करेगा तो डेफिनेटली काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो इंक्रीज. तो ये आएगा हाउ इट विल इंक्रीज, दैट एग्जांपल. सो जनरली फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज द 1/2 into mass into velocity square. So this is the unit. Kinetic energy also we are expressing in terms of joule, mass we are in kilogram, and velocity in terms of v square. So this is the formula you have to calculate. See this mass, एक कार vehicle है वो move कर रहा है having a velocity, so that body is having in motion, then only we can say it is a kinetic energy. So this is the kinetic energy. हाँ, here mass अगर double हो रहा है तो kinetic energy भी double हो रहा है, लेकिन velocity अगर double हो रहा है तो kinetic energy जो है 4 times वो हमारा increase कर रहा है. So this you have to remember. Most commonly come in competitive exam. Kinetic energy always depends upon the mass and velocity. अगर mass double हो रहा है तो kinetic energy हमारा doubles होगा. Velocity अगर doubles हो रहा है तो kinetic energy हमारा 4 times increase होगा. वो double ही नहीं होगा because mv square is there. तो velocity 4 times हो जाता है, kinetic energy को बढ़ा देता है. Okay, this is the example that you have to solve in your home. Then potential energy is the energy possessed by an object as a result of its position
or condition. It depends on the position or condition. So two common kinds है gravitational potential energy और elastic potential energy. Generally ये हमारे syllabus में नहीं है, just for your means kind information यहाँ पे हमने दिया है. If you are, these are the example. Then slinking when stretch and compress, spring है when stretch and compress, rubber band है when stretch, balloon with wear when compressed. These are the some example of elastic PE. ये हमारे syllabus में नहीं है, just for your information हमने. This is due to the condition. Okay, gravitational potential is when a chair lifted from ground at a distance of 1 meter. Then you're sitting on a third story. These are the some example. You may read in your home how this gravitational potential energy or elastic potential energy. Generally, this is not in our syllabus. Just for your kind information. Then conservation of energy is the term used to donate change in energy from one form to another. Say for example, if we are burning a candle, chemical से heat और light energy में convert हो रहे हैं, fuel है, so that is the chemical energy से heat energy, then kinetic, then electric energy. Nuclear explosion है, nuclear से heat और light energy. Spring है, तो elastic potential energy से kinetic energy. So this is the conservation of some energy. This is also not in syllabus. Now coming to the power. Power says, power generally we are expressing in terms of watt. अगर work done को अगर हम time से divide करेंगे, so that is your power. यहाँ दो example है crane और man का. ये हमारा example है crane और ये example है man. crane क्या कर रहा है? 300 kg का मास है. 300 kg का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वो क्रेन उसको मूव कर रहा है, मतलब उसको उठा रहा है और उसके लिए 3600 न्यूटन फोर्स उसको अप्लाई करना पड़ रहा है. सो 3600 न्यूटन्स अगर फोर्स वो अप्लाई कर रहा है तो डिस्टेंस हमारा 10 मीटर ट्रेवल कर रहा है. कितने सेकंड में? तो 60 सेकंड में. So how we can calculate the power? So it will come. दूसरा एग्जांपल है मैन का. मैन क्या कर रहा है? 100 kg मास का हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे वो 500 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो 6 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 5 सेकंड में. तो हाउ मच पावर वी आर अप्लाइंग हियर? सो 1 जूल, जनरली 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल इन 1 सेकंड. तो हाउ वी कैन अप्लाई? क्रेन में कितना होगा? वर्क डन बोल रहा है. यहां पे कैसे होगा? वर्क फॉर्मूला इज व्हाट? वी हैव कंप्लीटेड. वर्क फॉर्मूला इज व्हाट? F into S, है ना? तो क्रेन के केस में F is 3600 न्यूटन्स, S is 10. So you have to multiply with 3600 newtons to 10 meter will be how much? बोलो यार. Work done, power says work done divided by time. So work says F into S. So force we are applying 3600 and distance we are traveling 10 meter. So 3600 if we are multiplying with a 10, how much it will? बोलो यार. 21600. अरे यार 216 कैसे होगा? 3600 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 1000 से. हाँ 36,000 से. 36,000 है ना? 60 से डिवाइड तो करेंगे सर. अरे रुको ना यार, तुम हम दूसरा स्टेप पे हम नहीं गए हैं ना. पहला स्टेप में है, पहले स्टेप में रहो ना. दूसरा स्टेप में हम फिर बाद में जाएंगे ना. पहले वर्क कितना हो रहा है, वर्क डन कितना हो रहा है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना पावर निकालने के लिए. वर्क डन हो रहा है तो वर्क सेज F into S. So 3600 multiplying with 10
it will comes around 36,000. Then time is the 60 seconds. So you have to apply here 36,000 divided by 60. Then man के केस में क्या हो रहा है, 500 न्यूटन्स वर्क मींस फोर्स लगा रहा है 100 kg मास को मूवमेंट के लिए 6 मीटर हमारा वो मूव हो रहा है. So 500 newtons multiplying with a 6 will be how much? बोलो यार. 3000. 3000 and having a time. कितने टाइम में वो कवर कर रहा है 6 मीटर? 5 सेकंड में. 5 सेकंड में. So 3000 divided by 5. So this is the your answer. इतना वर्क हो रहा है तो वर्क we are expressing in terms of joule. So 36,000 joule in case of crane और man के केस में 3000 joule. Then we have to divide with a time 60 as 5 as. Crane के केस में 60 as, man के केस में 5 as. So how much watt of power we have to apply? So if we are dividing, how much it will come? 600. 600. कहाँ पे 600? दोनों में सर. दोनों में 600. सेम होगा. यस सर, सेम. Good. यस सर. So answer is this 600. नहीं 600 बोलने के बाद में don't forget to tell your the expressing unit. अगर एग्जाम में आ रहे हैं 600 कैलकुलेशन और केवल 600 लिखेंगे या जो भी उस फार्मूला से जो भी आएगा और हम W नहीं लिखेंगे तो फिर you will not get full marks. So power generally 600 joule per second. नहीं W is the watt ना, power. Yes sir. Yes, joule sir. per second Watt. sir. हाँ 1 watt is equal to 1 joule in 1 second. 1 joule in 1 second. But we generally power we are expressing in terms of watt. तो 1 watt is equal to 1 joule in 1 second. तो यहाँ पे 600 watt है तो कितना जूल in 1 second होगा? Okay, you calculate in your home. So this is all about the work, force, power, energy. Okay. If you are having any confusion, you can ask. Very simple. These are the fundamental things you have to know. थोड़ा सा ये फिजिक्स का है. Maybe और 2-3 क्लास आएंगे जिसमें थर्मोडायनेमिक्स हम पढ़ेंगे, कंप्रेशन साइकिल पढ़ेंगे, वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ेंगे, then वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, गैस लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सब आएंगे. ओके. ये टाइम खत्म होने वाले हैं. अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, नहीं तो ये कट हो जाएंगे. 1 मिनट बचा है. एनी कंफ्यूजन? ठीक है सर, कट कर दो. नो सर.